So guys, CA Final Chapter 8 Input Tax Credit, very important chapter in your syllabus. आप देखेंगे in your exam papers आप past के उठा के कुछ भी देखेंगे, practical questions plus theoretical problems, input tax credit का कुछ ना कुछ aspect they always ask. Okay, so now before getting into input tax credit in your syllabus, let's discuss for 2 minutes input tax credit which was available under the pre-GST period, and there were certain drawbacks. That's why this input tax credit under GST plays a major role, and the examiners also, the paper setters also, they tend to ask a lot of questions around input tax credit. So it's very important chapter. It is heart of GST, as I discussed in my previous video, which is value of supply. The value is coming from charging section 9 of CGST Act, section 5 of IGST Act. The charging section is the brain of any law, and similar to that, charging section is the brain of GST law. चार्जिंग सेक्शन से चार्जिंग सेक्शन इज आस्किंग यू टू लेवी जीएसटी, एंड वहीं से काफ़ी प्रोविजंस आ रहे हैं. Similarly, the input tax credit is heart of GST because GST is a value added tax, and because of input tax credit you get credit to offset against your output taxes, so you end up paying GST on the value addition. Otherwise there will be cascading of taxes which used to happen to a certain extent under the pre-GST period. So let's understand the certain drawbacks of the pre-GST period input tax credit. So मान लीजिए you are a trader, you are buying goods from a manufacturer. Okay, manufacturer was charging you excise duty because he was manufacturing the goods. Excise duty के अलावा manufacturer was also charging you VAT, right, or CST. Basically he was charging you sales tax because he was selling goods to you, right? So the goods which you are buying from manufacturer say are for 1,000 rupees. Manufacturer say was charging you 10% excise duty, which comes to 100, and manufacturer was also charging you VAT, which was again say 10%, but this 10% is not on 1,000, it will be on value including excise. So he will be charging you, he was charging you VAT on 1,100 in an example and not on 1,000. So there was trade, there was tax on tax, right? So this was the major number one drawback. The second drawback was the central sales tax. So if you were procuring any goods from outside the state, say you are a dealer in Maharashtra, you are procuring the goods from Gujarat, and you are paying 2% CST to your seller. Okay, this 2% CST was never available as credit under the pre-GST period. So this was a straight cost to your business. Okay. The third major drawback was, and this is very important, the central taxes were not talking to the state taxes. So this excise duty, service tax were all central taxes. VAT was state tax. Similarly, entry tax, entertainment tax, there were various host of taxes. So they were not talking to the the central taxes. So in this example, when you are buying goods from a manufacturer, you paid excise duty and VAT. So this excise duty will never be available as credit to you because you are a trader and you are selling the goods as it is. So you will pay output VAT. Since you are not paying any central taxes like excise duty or service tax, this excise duty was never available as a credit to similar trader in our example. Okay, and also a question will come in your mind, what about service tax? So yes, if suppose your office is on rent, your warehouse is on rent, and you are procuring service of renting, you are paying rent to your landlord, you are paying 18% or 15%. पहले 15% service tax था, so you are paying service tax, and this service tax was also not available as a credit to you because you are a trader. So this entire excise and service tax was a cost to you. Okay, so these were some of the drawbacks, bigger drawbacks in the pre-GST period, which is getting resolved under GST. So let's understand input tax credit. So input tax credit, as the name suggests, input tax. So what is input tax? Input tax is the taxes which you pay to your vendor, right? अगर आप देखेंगे on the right hand side, the first box which talks about input tax definition. What is input tax? If you see the C plus S I UT GST charge on inward supply. Okay, so अगर आप इंट्रा स्टेट कुछ खरीदेंगे तो यू विल पे C प्लस एस, राइट? आपने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा होगा चैप्टर में. अगर आप इंटर स्टेट खरीदेंगे तो आपको IGST लगेगा. अगर आप यूनियन टेरिटरी में है, इफ यू आर बाइंग एनी गुड्स, तो आपको UT GST लगेगा प्लस CGST लगेगा, राइट? सो इनपुट टैक्स इज सिंपल, CSI UT GST. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपोर्ट. हमने डोमेस्टिक समझा, अब इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट पे क्या लगता है, राइट? इंपोर्ट पे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगता है. जो आप कस्टम्स चैप्टर में पढ़ेंगे, कस्टम्स के सिलेबस में 25 मार्क्स का आपको कस्टम्स ड्यूटी आता है, राइट? सो
कस्टम्स ड्यूटी का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, देयर इज बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, देयर इज आईजीएसटी एंड देयर इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज. This IGST has replaced CVD and SCD in the which was prevailing in the pre-GST period because excise and VAT is no more. So both are subsumed under IGST. So because this is IGST on import, so यहाँ पर आप देखेंगे inputs के definition में input tax में IGST on imports भी आ गया. ठीक है, और क्या लग सकता है, और reverse charge लग सकता है, right? So if you are procuring goods or services where you are liable to be GST under reverse charge, तो आपको GST लग जाएगा. It could be IGST, it could be C plus S, or it could be U plus UTGST plus SGST, sorry CGST. Clear? So अगर और लास्ट मैंने डाल दिया डज नॉट इंक्लूड टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन लेवी. सो एज यू आर अवेयर, कॉम्पोजिशन लेवी में आप टैक्स कभी भी कलेक्ट नहीं करेंगे सामने वाले से, बट यू विल पे अ फिक्स्ड फ्लैट रेट ऑन दैट सप्लाई एंड द रिसिपिएंट विल ऑलवेज, क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं होता है. सो दे हैव जस्ट क्लैरिफाइड उसका, आई डोंट थिंक सो इट वाज रिक्वायर्ड, बट दे हैव क्लैरिफाइड दैट द इनपुट टैक्स डज नॉट इंक्लूड tax paid under composition supply. Okay, so very simple, it is the taxes which you pay to the vendor: CSI, UTGST, IGST on imports and reverse charge mechanism. Okay, clear? Now input tax credit क्या, input tax credit is simple credit of input tax, तो input tax credit बन गया. Now guys, if you see this circular diagram on the left hand side, again guys please understand this, you might have find it little different that okay, this guy he is teaching through a slide. So this slide is for you guys to prepare for an exam. From exam perspective, during our days, I remember review of the syllabus in one day. That's why you guys prepare notes, everyone prepare notes. So this is one form of preparing notes. Okay, you guys you are free to prepare your own notes, but this kind of notes will help you. At a glance you will be able to summarize and go for exam. So if you see indirect tax, if you understand the concept, you don't have to by heart. If you understand the concept, then you will be able to easily score marks in the exam. So this circular left hand side diagram, it is section 16. This slide is section 16 and the related rules. So to summarize your entire input tax credit syllabus, input tax credit chapter, ध्यान रखिए section 16 to section 21, it summarizes entire input tax credit, your syllabus, concept and rules. So as we have agreed, we have discussed, rules are also important. Rule, so under for input tax credit 36 to 45, please keep in mind rule 36 to 45, these are the rules which are relevant for input tax credit. So in this slide we will understand, we will section 16, which is the basic section of input tax credit, and rules 36 and 37. शुरू करें. So section 16 क्या बोलता है? Section 16 talks about your eligibility and your basic conditions for taking input tax credit. Okay, so if you see, let's go step by step. Section 16 क्या बोलता है? First condition, you should be a registered person. Very simple. आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, okay, as a consumer, when you are buying anything from say Amazon, Flipkart, you are going to a mall, if you see the vendor, he will always ask you, sir, do you have a GST number? And you say no. So that means अगर आप जो भी इनवॉइस देखेंगे उसमें you become a B, that transaction become a B2C, business to consumer. So आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है because you are not registered. और मान लीजिए अगर आपकी खुद की कंपनी है, you are buying something from for your company or for your business, you will always produce GST number और उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, obviously subject to certain conditions and restrictions. If you are eligible, you will get the credit. So first and foremost condition for input tax credit is you should be registered under GST. Clear? Second condition is, if you see, we have already discussed subject to certain conditions, and we will understand what are those conditions and restrictions. And second most important condition is it should be in the course or furtherance of business. Okay, so मान लीजिए आपकी कंपनी है, ठीक है, आपने जीएसटी नंबर दे दिया सामने वाले को, आप एक चेयर ले आए, ओके, वो चेयर आप अपने घर के लिए ले आए, राइट, तो उस पर जो आप जीएसटी भरेंगे, भले आपने जीएसटी नंबर दिया, आप इनवॉइस लेके आए हैं, वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज नॉट यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ओके, fine. So this is section 16. The first section 16.1, it talks about two basic criteria which is very important. First is you should be registered under GST law, and the second condition is the goods or services should be used in the course or furtherance of business. Clear? Now let's discuss, let's go right ways, clockwise, the main conditions or other conditions of
जीएस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो फर्स्ट आप कंडीशन देखेंगे, एंड गाइस इट इज़ वेरी लॉजिकल। आप फर्स्ट कंडीशन देखेंगे जब आप कुछ भी खरीदने जाते हैं और यू आर इनटू बिजनेस, आप कुछ भी खरीदेंगे तो आप उससे बिल मांगेंगे। ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज GST invoice. Okay, now GST invoice could be a debit note also. Okay, or any other tax paid documents as may be prescribed. So whenever you hear or whenever you read as may be prescribed means you have to go to the rules. तो आप देखेंगे इसके लिए रूल 36 इज, अगर आप देखेंगे ग्रीन में, विच इज रूल 36, it talks about, specifies all the tax paying documents. It starts with GST invoice, self invoice. Self invoice क्या है? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज आप लेते हैं, there are certain unregistered suppliers. Okay, say advocate services procured from an advocate comes under reverse charge. Okay, legal service, तो उसमें क्या होगा, advocate would not be registered under GST because advocate is not liable to pay GST, right? So उसमें आपको self invoice raise करना है under GST law for taking credit. So self invoice is a duty paying document. Third is debit note. Fourth is bill of entry. जैसे हमने imports देखा, imports में bill of entry is the document for taking the credit. Okay, so these are the four, and fifth is ISD, input tax input service distributor. So ISD concept क्या होता है, आई एम श्योर आपने पहले भी इंटर में पढ़ा होगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि सपोज you have a central head office in Mumbai and you have various locations, factories all over the India. तो जो आप कॉमन इनपुट सर्विसेज खरीदते हैं और लेते हैं, से रेंटिंग हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस हो गया, ऑडिट सर्विस हो गया, तो ये सब सर्विसेज आपको एचओ में आपके पास आउटपुट टैक्स नहीं है पे करने के लिए, बिकॉज आपका आउटपुट पे ना आप जीएसटी भरते हो, राइट? बिकॉज यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, राइट? सो यू आर जस्ट मैनेजिंग और यू आर मॉनिटरिंग ऑल योर लोकेशंस विद इन इंडिया। ओके, सो लॉ क्या बोलता है, गवर्नमेंट बोलता है कि डोंट वरी, द GST which you are paying on your input services which are common in nature, that you can distribute to all your locations in the ratio of the turnover. So you will issue a ISD invoice, input service distributor invoice. This concept was also available in the service tax regime. They have replicated the same concept under GST. तो ये जो ISD इनवॉइस अब जो हेड ऑफिस इशू करेगा टू मल्टीपल लोकेशंस, वो इनवॉइस वो लोकेशंस के लिए बन जाएगा टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट फॉर टेकिंग द क्रेडिट, फॉर टेकिंग क्रेडिट ऑफ GST मेंशन इन द इनवॉइस। सो जो कॉमन क्रेडिट है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो सब जगह वो लोग क्रेडिट ले पाएंगे, एंड दे विल ऑफसेट दोज क्रेडिट्स अगेंस्ट देयर आउटपुट लायबिलिटी इन दो स्टेट्स। अंडरस्टूड? So these are the duty paying documents. Okay, and when we are studying this debit note, credit note, we will come to rule 36 again. Let's first discuss the basic conditions. Now let's move forward to in the anti-clockwise. The second, if you see, the second condition is receipt of goods, so or services. So it is again very logical. आप खरीदने गए, कुछ भी आपने इनवॉइस मांगा, ऑब्वियसली आप गुड्स बिना लिए तो आ नहीं जाओगे। तो सेकंड कंडीशन इज गुड्स और सर्विस, यू शुड रिसीव द गुड्स और सर्विसेज। नाउ गाइस, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बिल टू शिप टू, एंड इट इज़ वेरी इजी। Some students get little scared, oh what is this bill to ship to? So bill to ship to is very simple. Again, say you are a trader, coming back to the original example, you are buying goods worth ₹1000, ठीक है, लेकिन वो goods आपको आप बेच रहे हो C को। ओके, सो यू आर बाइंग गुड्स फ्रॉम A, you are selling these goods to C. Okay, now instead of taking delivery of those goods, you ask A that bhai, you issue these goods directly to C. Okay, I don't want delivery, I will raise an invoice on C, but आप directly goods C को भेज दो। So this condition of receipt of goods is relaxed. So law says in case of bill to ship to, the bill to will be deemed to be recipient of goods. So guys, इसमें क्या होगा, let's understand this concept. So इस केस में A ने आपको बिल दिया, okay, एंड गुड्स गया डायरेक्टली सी के पास, ठीक है, तो अंडर लॉ बिल टू इज डीम टू बी रिसिपेंट, सो यू विल सेटिस्फाई दैट कंडीशन। बिल आपके नाम पे है ए का, आप क्रेडिट ले लोगे। नाउ द इनवॉइस, द बिल विच विल रेज ऑन सी, क्योंकि आपने भी सी को बेचा है, राइट? तो आप जीएसटी इनवॉइस सी को बेचोगे और आप वो जो क्रेडिट आया वो आप ऑफसेट कर लोगे अगेंस्ट योर आउटपुट जीएसटी ऑन योर सेल टू सी। अंडरस्टूड? सो कितना लॉजिकल है, एंड फ्रॉम, so otherwise there would have been a lot of problem, lot of mess. So what the law says is in case of bill to ship to, bill to will be deemed to be the recipient of goods. So it simply says if this is bill to ship to, don't worry, even if you don't receive the goods, you will satisfy that second condition. Clear? Now third condition, okay, third condition is the filing of return. So guys, again now we have discussed two basic conditions, which is receipt of invoice, receipt of goods. Okay,
नाउ थिंक फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव. गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई तुम ये सब जो खेल रहे हो, यू आर बाइंग गुड्स, यू आर गेटिंग इनवॉइस, गेटिंग द गुड्स, बट आई डोंट ट्रस्ट. Government says, what about my money, my tax? So government, the third condition is the credit will be eligible provided the tax is paid by your seller. Okay. Okay. And the fourth important condition is he should be filing, you should be filing rather, the return under section 39, wherein you are required to file your inward return, which is right now 3B. It's called GSTR 3B. So you are required to file that return, the fourth condition. And these are the once you fulfill all the four conditions, you will be eligible for the credit. Now, when we say, coming back to the third condition, when you say pay the taxes, okay. Now here it is very important, when we say pay the taxes, and if you see the fourth condition, some filing of return, okay. So does that mean that अगर vendor जमा नहीं कराएगा आपको credit मिलेगा नहीं? Does that mean that? No. So here if you see, आप अगर जो आप देखेंगे, it says subject to provisions of section 41. So section 41 says, don't worry, you can provisionally declare that the credit is eligible and you can go ahead and take the credit. और जो matching है, wherein you have to match your input taxes with vendor's output taxes, क्योंकि vendor भी return file करता है his output return GSTR 1, और उसमें वो vendor invoice wise पूरा detail दिखाता है, तो वो matching आप बाद में कर सकते हो. Okay, so these are the four basic conditions which is prescribed under section 16. So first is receipt of invoice, receipt of goods. Second is, third is the taxes should be paid by the vendor, your supplier of goods or services. And fourth condition is you should be filing the return. Okay, and return is subject to section 41. मतलब आप provisionally credit declare करके आप credit ले सकते हो, and you will not be at a loss from working capital perspective. जो credit आया आप ले सकते हो from the date of invoice, और आप आगे बढ़ सकते हो, और आप टैक्सेस अपना जीएसटी आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट आपको कैश नहीं भरना पड़ेगा, आप क्रेडिट यूज कर लीजिए और आप आउटपुट टैक्स डिफरेंस का भर दीजिए. ओके, क्लियर. स्लाइड सबसे नीचे आप देखेंगे ग्रीन में एक छोटा सा टेक्स्ट डाला है मैंने, कॉन्सेप्ट कंडीशन ऑफ 180 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एंड दिस कंडीशन वाज ब्रॉट टू प्रोटेक्ट द एमएसएमईज, छोटे जो प्लेयर्स है मार्केट में. सो आपने कंडीशंस पढ़े, इसमें होता है कि बायर विल पे टू द सेलर, ओके, टैक्सेस, वेंडर विल डिपॉजिट, सेलर विल डिपॉजिट द टैक्स टू द गवर्नमेंट, आपको इनवॉइस मिल जाएगा, आपको गुड्स मिल जाएगा. बट what if you don't pay to the vendor in time? Okay, so here the government has come up with a very logical law which says you don't worry, you can pay, you can take the credit right from the date of invoice, when you receive the invoice and your other conditions are getting satisfied, because if you see section 41 बोलता है कि आप self declare करके credit भी ले लो. So here this condition says while you are taking the credit, but you have to pay to the vendor within 180 days from the date of invoice. Okay, this is just to protect the smaller players. Okay, so while I'm saying smaller players, but this is applicable to everyone. Okay, to whether big or small, howsoever the vendor is, सबको आपको 180 days में पैसा देना पड़ेगा. Now the question comes in your mind that हम पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा? Okay, so पैसा आप नहीं दोगे तो 180 days में अगर आपने जो इनवॉइस अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट नहीं दिया, तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट 18%. ओके, इसमें एक और अच्छी चीज़ है कि सपोज मान लीजिए आपने 8वें महीने में आपने वेंडर को पैसा दे दिया, तो ये जो क्रेडिट आपने रिवर्स किया था ये आप फिर से ले सकते हो. सो दिस इज, ये कंडीशन ध्यान में रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज अगेन वेरी लॉजिकल, ITC will not be allowed if you are taking depreciation. So if you are buying capital goods, आपने गुड्स कैपिटलाइज किया है, आप उस पर डेप्रिसिएशन ले रहे हो, उससे साल का 20% डेप्रिसिएशन ले रहे हो, तो वो आपने अगर एसेट को कैपिटलाइज किया है इंक्लूडिंग जीएसटी, आपने एसेट खरीदा ₹1,00,000 का, आपने जीएसटी भरा से 10%, 10,000 रुपये आपने जीएसटी भरा, आपने 1,10,000 का एसेट खरीदा है से एयर कंडीशनर, अब उसको आप कैपिटलाइज करते हो एंड यू आर कैपिटलाइजिंग द जीएसटी component also. So definitely you will be taking advantage of depreciation, benefit of depreciation in the span of 5 years. So law says you cannot take GST credit, you cannot take double credit, because आप जहाँ पर depreciation claim कर रहे हो आपको income tax में फायदा हो रहा है, so you cannot take double benefit, you cannot take another benefit in GST. So the most important condition is, and it was there earlier also in the service tax regime, if you are capitalizing the goods along with the
input tax credit, that is GST, you cannot take credit. Okay, so generally what people do is in this example, 1 lakh rupees they capitalize, they take it to their asset, they take depreciation on that, and the 10,000 rupees, which is your GST component, that you take as input tax credit, and the very same year you can offset against your output liability. Clear? Now one more very important condition, if you see the right hand side, the last box, last dabba, it says आपको जो इन्वॉइस आया, आपने कंडीशंस मीट कर लिए, आपने 180 डेज में पैसा भी दे दिया, जो भी किया आपने, आप ये क्रेडिट कब तक ले सकते हो? ओके, सो देर इज, यू कैनॉट infinitely you are eligible for that credit. Okay, so the law says for a particular financial year where you have received the goods or services, and for this financial year the invoice pertains to, the time limit, the outer time limit for taking the credit is, आप जो सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न फाइल करते हो, ओके, उसका जो आज के डेट में इट इज 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, सो दैट मीन्स 20th अक्टूबर of the next financial year, or filing of annual return, whichever is earlier. For invoice issued on 1st April of the financial year, you get 18 months, and if you are buying any goods or services on 31st of March, you get, and the invoice is issued on 31st March, you get 6 months to take the credit. Clear? Now here very important catch is that if you see time limit, this time limit of 30th September will not apply to credit reavailed. हमने अभी डिस्कस किया 180 डेज का, आपने 180 डेज चला गया, यू कुड नॉट पे टू द वेंडर द इनवॉइस वैल्यू प्लस जीएसटी, यू हैव टू रिवर्स द क्रेडिट, और जब आप पे करते हो और जब तब आप क्रेडिट लेते हो, तब आप सितंबर के बाद भी ले सकते हो. सो अज्यूमिंग, टेक एन एग्जांपल, यू रिसीव इनवॉइस इन दिसंबर, ओके, आप जून तक पैसा देना था, आप नहीं दिए वेंडर को, यू हैव टू रिवर्स दैट क्रेडिट, but in the next December, which is after expiry of that September deadline, if you make payment to the vendor, you can still reavail the credit. So this is a very fantastic provision under GST law. Okay, clear? So guys, now we have discussed section 16, and we have also discussed some of the very important aspect of the basic conditions of input tax credit. And if you see this the cycle, if you see, it is very logical. पहले आपको इनवॉइस मिलेगा, फिर आपको गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे, आप उसका पैसा दोगे, पैसा आपको 180 डेज में देना है, भले कितना भी क्रेडिट पीरियड हो, फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. द थर्ड कंडीशन इज टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए, लेकिन टैक्स नहीं भी पहुंचा, अगर आप देखेंगे फोर्थ कंडीशन जो है, विच गिव्स यू सम रिलैक्सेशन, इट इज़ नॉट अ रिलैक्सेशन, बट it is kind of, you don't have to verify or you don't have to prove at the time of filing return. You have to file the return, which is fourth condition, but you can self declare the eligibility and you can take the credit, while you can match your credits with the output taxes paid by the vendor with vendor's return. Vendor जो GSTR 1 फाइल करता है, वो आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, इट्स कॉल्ड GSTR 2A, और उससे आप मैच करके यू कैन टेक, एंड वी विल डिस्कस दैट फर्दर in upcoming slides. But this is how generally the mechanism works. आपको 4 कंडीशन सिंपल याद रखना है: इनवॉइस, रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, पेमेंट 180 डेज में जाना चाहिए, क्रेडिट लेने का टाइमलाइन है 30th सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न, और फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर. एनुअल रिटर्न का टाइमलाइन है दिसंबर, ऑल्दो इट कीप्स गेटिंग रिलैक्स्ड, बट जनरली दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका टाइमलाइन होता है, राइट? सो जनरली for any invoice on first day of the financial year आपको 18 महीने मिलते हैं, and there is a range, you have understood by now, it's 18 months to 6 months, okay, for taking credit, right? And we have now, if you see the middle box in green, rule 36 पे एक बार नज़र मारते हैं, rule 36 क्या बोलता है. और guys, बिफोर कमिंग टू रूल 36, हमने रूल 37 लगभग कवर कर लिया. इफ यू सी 180 डेज, रूल 37 वही बताता है जो मैंने आपको बताया है, कि आफ्टर 6 मंथ्स आपको कैसे लाइबिलिटी भरना है, और जैसे ही आप वापस पेमेंट कर देते हैं वेंडर को, तो आप क्रेडिट रीअवेल कर सकते हैं बाय शोइंग इन योर रिस्पेक्टिव मंथ्स in inward register and your GSTR 3B, your inward return. Okay, now if you see rule 36, very quickly we will discuss, we have already discussed the invoices. Rule 36 prescribes the tax paying documents. Now rule 36 also says that the tax paying document should contain all the particulars which are specified in chapter 6, which is rule 46. Chapter 6, when I say it is chapter 6, not in your syllabus, chapter 6 under the GST law. Chapter 6 जो rules है, rules are divided into various chapters. I think chapter 19 chapters are there in your CGST rules. Chapter 6 is the invoice rules, which specifically talks about
what particulars should go in invoice. So rule 36 क्या बोलता है? It says all the particulars in rule 36 in rule 46 should be covered in your invoice, in your tax paying document. To name a few, just it could be so all the particulars are GST of both the parties, invoice number, invoice date, then there should be value, taxable, tax, total value. Okay, so all this particular. Now here there is a catch. It says there is a proviso which says don't worry, even if the basic details are available in the invoice, you will be allowed credit, which is tax. अगर आप देखेंगे ब्रैकेट में मैंने डाला है tax, total value, description, GST number of both the parties, and POS, which is place of supply in case of interstate supply. क्लियर? ये 5 चीज़ें बहुत सिंपल है, याद रखना. अगर आप देखेंगे टैक्स तो होगा ही कोई भी इसमें, टैक्स टोटल वैल्यू होगा विच विल इंक्लूड टैक्स, देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, GST ऑफ बोथ द पार्टीज, कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है, एंड लास्ट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, which is again very important in a GST. Place of supply is where the goods or services are getting consumed. So वो आपको इंटर स्टेट सप्लाई में वो डालना पड़ेगा. इंट्रा स्टेट में ज़रूरत नहीं है उसका, विद इन द स्टेट में ज़रूरत नहीं है वो, बट इंटर स्टेट में वो एक POS भी आएगा. नाउ इफ़ यू सी, एक और छोटा सा कंडीशन इसमें डाला है 36 में, एक समझाया है कि अगर ये आपने टैक्स कोई फ्रॉड, विलफुल सप्रेशन, विलफुल मिस स्टेटमेंट के अगर उससे भरा है, कोई डिमांड ऑर्डर आया आपको और फिर आप भरते हो, तो वो टैक्स का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. Clear? So guys, this is the basic concept, basic conditions for input tax credit, and in the upcoming slides we will study more about what other conditions and restrictions are there under GST law, and on what conditions and what restrictions keeping in mind we can take the credits. Clear?